ख्याल मेरी सबमिशन ये है कि आप 199 में भी कर सकते हैं, आप कोर्ट्स ऑफ प्लेनरी जुरिस्डिक्शन, और अगर मुझे एक्सप्लेन करने दें तो मैं भंडारी साहब को वारंटों में कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहीं पर ये इसे फर्दर क्लियर करने के लिए, लेकिन वो इन लाइन विद आर्टिकल 62 होनी चाहिए एज पर योर आर्गुमेंट्स। जैसे सेल डेफिनेशन प्रीएम्पशन एक्ट में डिफरेंट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिफरेंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफरेंट। अब उसके अंदर जो भी डिक्री होगी वो फॉर स्पेसिफिक पर्पस हो। जी जी जी। अब इसमें आर्टिकल 62 के तहत जब तक डिक्लेरेशन नहीं होगा दैट विल नॉट बी इफेक्टिव। बिल्कुल ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कहां से आएगी बिफोर द स्टार्ट ऑफ इलेक्शन, हाउ ए पर्सन कैन बी डिक्लेयर्ड दैट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू कंटेस्ट इलेक्शन इफ इवन ही वाज ए पब्लिक सर्वेंट एंड देयर इज ए डिक्लेरेशन ऑफ writ of quo warranto against it. How that declaration can be used? My lord, अगर 62 देखिए, आप quo warranto तो हर होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस के पास हो सकती है। जब पहले होल्ड कर लेगा, ये तो इलेक्शन स्टार्ट ऑफ इलेक्शन है, he is going for इलेक्शंस के quo warranto किसी पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ भी तो हो सकती है ना। अब होगा, अगर 62 में ही पब्लिक ऑफिस में आएगा तो रिमूवल होगी ना उसकी। अभी तो ये एंटर करने के लिए quo warranto का प्रिंसिपल तो आपको पता है ना कि how he is holding the public office, he shall be removed. My lord, मेरी एक but for that he has to hold the public office. मेरी एक submission है with all due respect. My lord, I am here as an amicus. Let me give my views. If your lordships don't want to accept it, but I feel my lord, I feel I'm being cross-examined as if I'm no, apologies. I'm not a party. Relax. So totally agree with you. Totally agree. Clarity. Just for clarity. I'm probably turn around, say I want to withdraw my mic is brief. अच्छा चलिए, अब आपका पॉइंट, हम आपके अगला पॉइंट बताएं। नहीं, अभी तो खत्म नहीं हुआ जी। अच्छा ओके। अब आप लिख लें, आप लिख नहीं, आप से शुरू करें जी। नहीं सर, मैं यही जहाँ से सिलसिला टूटा था वही से शुरू करूंगा जी। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, दिस इज द पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स। ठीक, अब थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं। मैं लेट मी गो as per the structure of my own arguments. So my lord, I say stage 2 was appellate tribunal against the RO, can't do it, most probably not a court of law. Third stage, where the order of the election tribunal hearing an appeal against the RO's order is challenged in writ petition. That's article 199. My submission is it can be done by the High Court in that, and your lordship did that in Muhammad Jameel versus Amir Yar, PLD 2010, Lahore 583. Your lordship actually did that. Your lordship discussed 62(1)(f), rejected domination papers. That was precisely, the entire dispute was in the context of an election matter, somebody's eligibility to contest election, somebody's qualifications, and the facts spoke for themselves, and your lordship has dealt with them in great detail there. I see no reason why doing that, why exercising that jurisdiction, this unique constitutional declaration, and that's how your lordship Justice Mansoor described this. This is a constitutional declaration, not a section 42 declaration. Why it can't be granted in the exercise of article 199? In my humble submission, it can be, and your lordship did not actually grant that declaration, but could have done that. The facts actually justified that, the admitted facts. My lord, then I come to the next point. Supposing I'm still at the pre-election stage. And here, quo warranto can come at any point in time, but I'll deal with it at the post-election stage. The pre-election stage, then, my lord, in my humble view, a declaratory suit before a civil court ought also be competent. Your lordship, I know in the same case, Muhammad Jameel versus Amir Yar has held that no declaration can be granted to this effect. And that's consistent with the law that your lordship laid down in Laila Qayyum case 2019. Sorry, I need to help. Don't mind my saying interjection. Well, again, we want to simplify things, not complicate things. What you are doing, with respect, we want the RO
he has to take a returning nomination paper. उसकी ज़िंदगी में आसान बनाना है, मुश्किल नहीं बनाना है, हमें क्लैरिटी लाना है। इतना कन्फ्यूजन जो आप तो दिस इज मेकिंग इट मोर कंफ्यूजिंग। सिंपल सी बात है, कब वो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करे, कब वो उसको एक्सेप्ट करे। अगर कोर्ट में पहले वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है तो जिंदगी भर के लिए है या 5 साल के लिए, इस पे आप आ नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं इधर हो सकता है डिक्लेरेशन, उधर हो सकता है डिक्लेरेशन, तो आर को हम क्या लिख के बता के क्या उसको इंस्ट्रक्शन दे दें कि भाई ऐसे कर लेना काम। ये उसी से रिलेवेंट है तो बिकॉज आपने आर को ये भी तो बताना है कि उसके सामने क्या और कहां से आएगा, तो उसने क्या करना है। एक ही जगह से आएगा, उसको कहते हैं नॉमिनेशन पेपर। नहीं, बट उसने अगर ये डिसीजन लेना है कि ये उसे 62(1)(f लगाना है कि नहीं लगाना, तो जवाब देना इस बात। ये भी देखना है कि वो उसके सामने क्या मटेरियल आ रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ रवि, आप क्या क्या वो कोर्ट ऑफ लॉ बना दिया उसको उठा करके, उसको हजारों नॉमिनेशन पेपर जिनमें देखना। मैं तो नहीं कह रहा सर कि तो जरा सर आप हमें असिस्ट करें। मैं ये कह रहा हूँ कि आज एक आरोप के सामने कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन देखनी होगी। और मैं कह रहा हूँ कोर्ट ऑफ लॉ में हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन अंडर 199 आएगा। ये मेरी समझ। तो वक्त आएगा जब इलेक्शन होंगे, एक शख्स एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करेगा, फिर जाके फिर उसमें दूसरा क्वेश्चन ये आता है, जब वो एक शख्स पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है तो द कोर्ट विल डिस्क्वालीफाई हिम। Once he was qualified, he held the office. Subsequently, the High Court can, according to the High Court, can disqualify. अब disqualification 63 में दिया है, वहाँ में 62(1)(f की वर्डिंग्स ही नहीं है। तो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन इस बात पे नहीं हो सकती। Sir, we had invited you to help clarify. Hello. Sorry, I'm becoming more confused. You are not taking any position. You're saying this भी हो सकता है, this भी हो सकता है, this भी हो सकता है। Let's go to the basics. जाएं कहाँ? Learned Council, let's go to the basics. Focus करें ना उस पे। ये आर्टिकल 62 और 63 में हमें जरा बताएं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? Are they different? Are they intellect? आपके ख्याल में how do you see 62? What was the need of having a separate article 62? They could have easily had it in 63. Framers के ज़हन में क्या था? Possibly they could have had sort of one set of sort of conditions which covered both. They could have done that. They chose to do that because conceptually, and this is how it's been analyzed, they relate to two different things. Qualifications are positive attributes that some aspirant to an office must have. These are positive qualities that he or she must have. Disqualifications are attributes that he or she should not have. If those negative attributes are there, then they will take away his fitness or his or her fitness or competence to hold a particular office. Now they are linked, as I said, they are like Siamese twins, they are linked. But the reason they have been set out separately is that there are provisions, and I can point out two, for Article 41 and Article 100, which use the word qualified. They do not use the word